प्रिंसिपल श्री टी रामलिंगम सर रिटायर हो रहे हैं, यानी अवकाश प्राप्त कर रहे हैं अपने सर्विस से। और उनके साथ जब से यहाँ आए तब से मैं उनके साथ रहा हूँ, उनके साथ मिलकर के काम किया हूँ। और वह एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही अच्छे प्रिंसिपल रहे हैं हमारे साथ। हमारे जो साथी हैं उनके साथ उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा रहा। कभी उन्होंने एज ए ऑफिसर से बात नहीं किया, हमेशा दोस्तों की तरह व्यवहार हमारे साथ किया है। और हमेशा हमें मौका देते थे कि आप जो करना चाहें, जैसा करना चाहें, कुछ नए तरीके से पढ़ाना चाहें वो कर सकते हैं, हमेशा वो स्वागत करते थे। और कभी भी लोगों की बुराई या इधर उधर की चीज़ें उनके अंदर ये सब नहीं थी। और बहुत ही पंक्चुअल थे। बच्चों के साथ भी उनका व्यवहार बहुत अच्छा था और हम सभी उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं और मिस करेंगे। और मैं आज इस मौके पर सर के लिए दुआ करूंगा कि उनका आगामी वाला जीवन सुखमय हो, वह हमेशा इसी तरह स्वस्थ रहें और सुखी रहें और अपना समय परिवार के लिए अधिक से अधिक दे सकें। धन्यवाद। Pranam to our beloved principal, Sri Ramalingam sir. His retirement is a great loss, not only for Jan Vitarbha, but also for NBS, Navodaya Vidyalaya Samiti. Simply, we can describe him as a superhuman being, a hardworking teacher, a principal with a heart, caring not only for the students but also for the staff members. As you know, a person is known from his behavior towards his junior, those who are subordinate to him, those who are, we can say, inferior to him. And I can tell it for sure, as I am closely associated with Mr. Ramalingam. So I can say that he is very humble and it shows equal respect for everyone. You are a role model. I'm sure that so far your lifestyle is concerned, you are going to lead a happier life. But so far your hard work is concerned, we have to find a way, sir. All of a sudden, you cannot disconnect with all these things. Anyway, sir, wish you all the best. नमस्ते सर। पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं आपके इस सुखद सेवा समाप्ति के लिए। सर, आप हमारे लिए सिर्फ एक अच्छे प्रशासक नहीं थे, बल्कि एक अच्छे इंसान, मिलनसार स्वभाव के और कठिन परिश्रमी के व्यक्तित्व भी थे। सर, आपको और आपके परिवार को हम कभी भूल नहीं पाएंगे। खास करके मैडम के स्नेह और श्रद्धा को मैं तो कभी भूल नहीं पाऊंगा। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ, आपका परिवार के साथ खुश रहे, स्वस्थ रहे, आने वाले समय आपके लिए सुख हो, यही मेरा प्रार्थना है। नमस्ते सर। रामलिंगम सर, मुझसे काम करने के 5 साल का मौका मिला। बहुत ऑनेस्ट, सिंपल और ड्यूटीफुल, पंक्चुअल प्रिंसिपल थे। 5 साल में मैं उनसे बहुत कुछ सीखा। थैंक यू सर फॉर योर एबल गाइडेंस। I have learned many things from you, sir, during the course of journey from the childhood to till now. As a student, as a teacher also, that helps me a lot to change my career, get success in my career. And you are living from the JNB, that is very sad, because all the members of this family, they will lose one beautiful person in their group. So I pray to God that your post retirement life will be very happy along with your family wherever you will go. Please sir, please call us, or we will try to contact you when you will leave from this place. And it is very sad moment for me and for all of us.
Okay, sir. Be happy always. Thank you. Thank you. नमस्ते। काश फिर मिलने की बजाय मिल जाए, साथ जितना भी गुजारा हुआ वो पल मिल जाए। चलो अपनी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, क्या पता ख्वाबों में गुजारा हुआ पल मिल जाए। प्रिंसिपल श्री रामलिंगम सर रिटायर करके जा रहे हैं और इस समय उनके साथ जितने दिन हम लोग काम किए हैं वो सब चीज़ मेरे को बखूबी याद है। सुबह मॉर्निंग पीटी से लेकर रात को सोने तक दिन रात मेहनत करते थे वो स्कूल के लिए। जितना दिन भी हम लोग उनके साथ गुजारे हैं वो यादगार रहा है। हमेशा वो बच्चों के भलाई के साथ साथ स्टाफ का भी चिंता करते थे। उनके साथ प्रिंसिपल पाना आजकल के समय में बहुत ही मुश्किल होता है। मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करना चाहता हूँ कि उनके स्वास्थ्य ठीक रहे और हमेशा वो खुशहाल रहे। धन्यवाद। I've really got an opportunity to work with Mr. T. Ramalingam for long 2 years, and as I have learned and as I have experienced about Mr. T. Ramalingam, he is a fine gentleman, he is a very simple, he is a real human being in his attitude and behavior. Very important thing is that being the principal, he has all sort of qualities to perform the role of a principal. He is a role model for all the principals. Every principal should learn from him. All, not only he was a principal, rather he was a family member, he was a friend, not only of the staff but also of the students. Most of the time he will be visiting here and there from early morning before the sunrise, right from the morning PT till the last boy goes to the bed. He roams here and there in the campus. He was a part and portion of everybody's life. He is really a nice and gentleman, honest. Most important thing is that out of all these agonies and all, he is a very balanced person. I know him well. He is a good man and he is really an exemplary human being for all of us. Thank you. रामलिंगम सर जो है वो स्टूडेंट के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, टीचर्स के साथ भी, बाकी सब वर्कर्स के साथ भी, मतलब कभी किसी को डांटते नहीं है, दिल के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मेरे को तो सबसे बेस्ट प्रिंसिपल लगे। मैं लाइफ में सबसे बेस्ट प्रिंसिपल रामलिंगम सर को ही कहूँगा। Thank you, sir, for being a wonderful mentor, leader, and teacher. I wish you nothing but happiness in your retirement years. God bless. I was fortunate enough to work with you. You always motivated us to work hard. You are a great source of inspiration for all of us. May every day and every moment of your life be fulfilling and full of joy. Enjoy your retirement and have more time with your family and friends. We'll miss you as our principal, but we'll miss you more as our mentor, friend, and nurturer. Thank you. Namaskar sir, I thank you honestly for standing by us during hard and good times. I want to let you know how much we will miss all your things sir. Goodbye sir and have a happy and safe life ahead. Welcome sir, thanks for your encouragement. I will never forget those moments I have spent with you. Thanks for everything you have done for me. Wish you have a peaceful life ahead sir. Thank you so much. You have done so much for all of us and it really means a lot sir. You will be missed but never forgotten. Happy retirement sir. Namaskar sir,
We will never forget you, sir. The time we spent under you, it is really amazing, and that will be in our hearts as a good memory. A best wish to you on retirement. Thank you, sir. Vanakkam sir, thank you for your lot of support. The moment we spent that are great and memorable for us. Thank you sir, thank you so much. Charan first sir, thank you sir for taking me as a part of your life. The moment we spent together is really a great one sir. I will miss you as a teacher, as a principal, as a guru. But I will miss you more as a mentor, as a life maker, as a path maker. Thank you sir, thank you for everything. May God bless you with a happy and cheerful life, and best wishes for your retirement, sir. And hope you will enjoy time with your family and friends. And we'll miss you, sir. कितने आए कितने गए, पर हमारे बुरे वक्त पे आपका जैसे टीचर बहुत कम आए, और हाँ हमारे साथ रहे, जो हमें कभी अंदर से टूटने नहीं दिए। और आशा करता हूँ कि फिर आप हमारी ज़िंदगी में फिर एक बार फिर लौट आए। धन्यवाद। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ इतने समय बिता। आप हमको बहुत मोटिवेट, प्यार सब कुछ दिए हैं सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत दुख की बात है कि आपका रिटायरमेंट हो गया। हम आपको बहुत मिस करेंगे सर। ब्रदर फैमिली आपको बहुत मिस करेगा। Namaste sir. Just one thing sir. In 2 years in Janbir Sonpur, I feel like they are as a family and you as our parents. Thank you sir for that much of love. Happy retirement sir. We're gonna miss you sir. You were the best principal ever I seen in my high school educational period. You were such a great inspiration for many students. हृदय की गहराई से विनम्रता पूर्वक आपको नमस्कार। दुनिया की सारी खुशियाँ आपको मिले। विशिंग यू लॉन्ग एंड हेल्दी रिटायरमेंट। I am very happy today because you are going to a very special part of your life that is very important for you. So it's happy for me. You are very kind, you are very loyal. So don't change yourself, sir. Thank you, sir. Vanakkam sir. I really feel proud to have such a mentor and guide like you, sir. You have always been a pathlighter. One thing I learned from you that whatever we earn in our whole life, either this is money or wealth, doesn't matter, sir. What matters is the love, the people we earn. Only they are going to remember. I will pray God to keep you healthy, happy, and active for the new phase of life. I hope you have a wonderful retirement, sir. You will be missed but never forgotten. You have done so much for all of us. I wish that your retirement will be everything you dreamed that would be. Thank you for everything, sir. Thank you, sir, for all your love, all your kindness, and the reservoir of knowledge you share with us. Hello, sir. Namaste. We are so grateful to have you as our principal. Your improvement of school communications has done wonders for the safety of our children. We really appreciate staying up to date with the lives of our students despite our own busy lives as parents. Sir, you are such a wonderful teacher for us. So thanks for everything, sir. We really miss you. Miss you a lot, sir. Thank you. Love you, sir.
छोटे थे यह दिल छोटा था, बने आपके जैसा ये दिल सोचा था। जब हम छोटे थे यह दिल छोटा था, बने आपके जैसा ये दिल सोचा था। सपनों में जो पंख लगे उड़कर दिखलाएंगे, जो दिन है गुजारे साथ साथ वो याद आएंगे। ना भूल पाओगे ना हम भूल पाएंगे, याद आएंगे वो सब याद आएंगे। छू लो हर मंजिल यही चाहेंगे हम, बन जाओ काबिल जश्न मनाएंगे हम। छू लो हर मंजिल यही चाहेंगे हम,